every year, and this time the venue for the parade is Air Station, Chandigarh. The Chief of Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC will be reviewing the parade this morning. दर्शकगण इस परेड को देखने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही वायुसेना के अधिकारी और उनके परिवारजन के साथ साथ चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के वासी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आकाश पर ग्लाइडर फ्लाई करते हुए सभी ऊपर निहार कर देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना की अपनी क्षमता का जायजा ले रहे हैं। कुछ पलों में ये समारोह शुरू होने जा रहा है। बहुत ही गर्व का ये दिन जब हम आज वायुसेना दिवस एक भव्य व गरिमामयी समारोह के रूप में मना रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विस्तृत एवं गर्वीला इतिहास है, जिसमें उपलब्धियों के अनेक क्षण, अवसर और माइलस्टोन्स शामिल हैं। The Indian Air Force is one of the oldest, largest and professionally acclaimed air forces in the world. With a wide range of weapon platforms and systems and proficient air warriors, it has earned respect of friends and adversaries alike. The Indian Air Force has been striving towards modernization of its weapon systems and training to keep pace with ever-evolving geopolitical scenarios. The sea change that the Indian Air Force is undergoing, both in terms of technological advancements and human resource development, is reflected in this year's theme, Transforming the Future. Over the years, the Indian Air Force has been attuned to emerging technologies and has imbibed best practices from across the world. We have modernized our arsenal and adopted technology to deploy, fight and win full-spectrum warfare, always and every time. भारतीय वायुसेना विश्व की प्राचीनतम वायु सेनाओं में से एक है, जिसमें सदैव शामिल रहे हैं जांबाज हवाई लड़ाके, आधुनिकतम व असंख्य हथियारों की क्षमता, दक्ष पायलट्स और इंजीनियर्स, ग्राउंड ड्यूटी के स्टाफ व वायुसेना से जुड़े हर एक अधिकारी कर्मचारी गण। भारतीय वायुसेना का इस वर्ष का विषय यानी थीम है भविष्य की ओर रूपांतरण। इसी लक्ष्य को दर्शाते हुए आज भारतीय वायुसेना की ओर से उन्नत और आधुनिकतम विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही इन आधुनिकतम विमानों को उड़ाकर हमारे वायुयान चालक अपनी अद्भुत उड़ान कुशलता का परिचय देंगे। नैनाभिराम दृश्य बनाते ये पायलट्स हल्के बादलों से घिरा आकाश, चंडीगढ़ के स्टेशन से आप एयरफोर्स स्टेशन से आप ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं। वर्ष 1932 को जन्मी भारतीय वायुसेना ने अपने पिछले 9 दशकों में पिस्टन इंजन के जहाजों से लेकर वर्तमान आधुनिक जेट इंजनों तक का सफर तय किया है।
कशिश जन इस परेड स्थल पर परेड देखने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। दूर आसमान पर लहराते ये ग्लाइडर्स हमें नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अंतरिक्ष युद्ध, साइबर वॉर, हाइपरसोनिक मिसाइलों की उन्नतीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि नए आयामों की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाया है। आज हम भारतीय वायुसेना के इस उन्नत तकनीक का परिचय देखने जा रहे हैं वायुसेना दिवस के अवसर पर। भारतीय वायुसेना ने न केवल लगातार नई तकनीकें अपनाई हैं, बल्कि स्वदेशीकरण के माध्यम से देश में ही निर्मित नई तकनीकों का विकास भी करती आई है। दर्शकों को लुभाते ये आसमान पर लहराती ग्लाइडर्स और सुदूर विभिन्न मिसाइल और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए जो हमारी उन्नत तकनीकी हैं, उनको प्रदर्शित करता ये परेड स्थल। दर्शक गणों ने अपना अपना स्थान ले लिया है। स्कूल के बच्चे, वायुसेना से जुड़े जो लोग हैं, उनके अभिभावक, उनके बच्चे भी इस परेड को देखने पूरी उत्साह से इस स्थल पर आए हुए हैं। A lot of enthusiasm that can be seen on your television screens among the spectators, all waiting for a grand parade that will soon commence. Over the years, the Indian Air Force has become one of the most potent air forces to reckon with. The Indian Air Force used to conduct the Air Force Day parades at Palam, New Delhi, and in due course the venue was shifted to Hindon at Ghaziabad. Following the guidelines of the government this year, the Air Force Day parade was shifted to another location where you are presently seated, so as to offer greater visibility of its capability to the people of India. The Indian Air Force has bestowed the honor of conducting this year's Air Force Day parade to the prestigious and most operational Air Command of the Indian Air Force, the Western Air Command. And what better venue befits this onerous responsibility than Air Force Station Chandigarh. A word about Air Force Station Chandigarh. The station was formed under the command of Group Captain Olak, who flew down from Delhi in an otter aircraft along with his team to set up this wonderful base. The base inherited 1,500-yard long concrete strip, a small ATC building, and a patch of hard standing for parking of Dakotas. On arrival, the team pitched tents and went about establishing the base in the right earnest. In 1962, the base played a stellar role by airlifting tanks in AN-32 aircraft at Trishul, ALG, right into the battlefield at the border with China. Even today, the base serves as a critical asset for ensuring round-the-year air maintenance of our combat forces in Jammu and Kashmir and Eastern Ladakh sector. Presently, the base has C-17, IL-76, AN-32 and Chinook aircraft of the Indian Air Force operating from it.
That's the Air Force band. The Air Force band on parade today is led by Warrant Officer Deepak Verma. The band will march in and enthrall you to rendition of martial tunes. अब हम आपको परिचय दे रहे हैं आज के समारोही बैंड से। इस समारोही परेड में इस परेड को लय एवं दे रहा है नंबर 3 और नंबर 6 वायुसेना बैंड, जो कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तथा एयरफोर्स स्टेशन पालम के अंतर्गत स्थित है। वायुसेना बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर दीपक वर्मा। The band in attendance today is number 3 and number 6 Air Force band. संगीत की मधुर स्वर लहरियां परेड स्थल वातावरण में गूंजती हुई। ये एयरफोर्स बैंड है जो मार्शल ट्यून बजा रहा है। We would like to inform you that the first Air Force band was raised in the year 1944 at the Royal Air Force Station, Kohat. The band moved to Air Force Station Jalahali, Bengaluru in 1947. Military field music comprises bugles, wind and percussion instruments like trumpets, natural horns, bagpipes and drums. Military tunes were earlier used to control troops on the battlefield as well as for entertainment. Following instruments such as the trumpet or the saxophone family of brass instruments, a second tradition of all brass band were also formed. Today, band is led by Warrant Officer Deepak Verma. परेड बैंड के अलावा अन्य सैन्य कलाकारों की टुकड़ी इसमें शामिल है। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, जैज बैंड और गायक समूह। The band today will be playing martial tunes like Astronaut, Space Flight, Rafale Flyers and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Acha. बिगुल की धुन पर परेड मार्च करते हुए इस परेड ग्राउंड में आएगी। जब भी निशान टोली परेड ग्राउंड में आती है तो परंपरा है कि सभी दर्शक इसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और वर्दीधारी गण इसे सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। True to the martial traditions, at the sounding of the bugle, air warriors will march in from both sides of the parade ground today. The marching contingent will comprise 4 squadrons with 2 flights each. As is the custom, the Air Force colours will be displayed during the parade. When the Air Force colours are marched onto the parade ground, it is customary for all uniformed personnel to salute and all others rise in its respect and honour. In a few moments, the bugles will herald today's parade. That's the Nishan Toli. भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर उपस्थित दर्शकों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। सभी आयु वर्ग के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस परेड को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं।
वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम है। ये वायुसेना के आह्वान नभास प्रशम दीप्तम को सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हों, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। The parade is now marching in from your right and left, keeping in step to the tune of Northern Borders. The marching contingents, arms swinging, heels digging, heads held high, proud of their blue Air Force uniform, heritage and the motto, touch the sky with glory. The parade on display today has been trained by squadron leader Atal Singh Sekhon and his team. The marching contingent is about to display a scintillating performance of precise and smart drill. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence and dedication. They are radiating with pride as they put their best foot forward. आगे बढ़िए, तैयार बात, बढ़, ब्रेक, तैयार, सेट। The parade adjutant, Flight Lieutenant Abhigyan Singh, will now hand over the parade to the parade commander. Today's parade commander is Group Captain Anup Singh, Vayu Sena Medal. Parade commander will now take over the command of today's parade from the parade adjutant. Group Captain Anup Singh was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in December 2001. A graduate of the National Defence Academy, he is a qualified flying instructor and has flown 2,800 hours on Jaguar and Hawk aircraft. He has commanded the Sudikiran aerobatic team and is presently posted at a base in training command. Nishan Toli will now be marched in by Flight Lieutenant Chirag Shoran. Please rise in honor of the President's colors. All uniformed personnel shall salute.
जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो गए तथा वर्दी भारी पर आज के निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लाइट कैप्टन चिराग शेवरा। President's Colors, a mark of honor who presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954 in recognition of his service to the nation. President's Colors, therefore, are the highest honor for a service and are displayed with highest regard and pride on special occasions like this. Presentation of the colours to the Indian Air Force on 1st April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. President Air Force Vice Welfare Association Regional, Mrs. Rekha Prabhakaran has arrived. She has been received by President of our local, Mrs. Panchali Lal. Red, Punjab, Shast. Red, Vesh, Ram. As the parade is held within his command, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command will be presented with a general salute on his arrival onto the parade ground. Ladies and gentlemen, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command is about to arrive. Red, Sav, done. In a few moments from now, Air Marshal Shri Air Kumar Officer Commanding-in-Chief, Prabhakaran, Western Air Ati Command Vishisht will Seva Medal, arrive. Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command has arrived. He has been received by Air Commodore Mansij Lal, Air Marshal Air Shri Officer Kumar Commanding Prabhakaran. Air Force Station, Chandigarh. Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command has arrived.
As the parade is held within his command, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command, has been presented with a general salute on arrival. We now await the arrival of Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, the chief guest, who will review this parade. The Indian Air Force has been actively supporting and implementing the national vision of Atmanirbhar Bharat, or self-reliant India. We have been at the forefront of indigenization with the induction of light combat aircraft Tejas, Arudra and Ashlesha radars, Astra air-to-air missiles, Akash surface-to-air missile system, advanced light helicopters, integrated air command and control system, and integrated material management online system. As a part of achieving self-reliance, the Indian Air Force has successfully undertaken various life extension programs, upgrades and reclamation and repair schemes for the existing legacy platforms and systems by tapping the potential of various Indian agencies. It is a constant endeavor of the Indian Air Force to modernize and enhance its capability to effectively address any emerging threats. वर्ष 1965 के युद्ध में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो सैनिकों के बलिदान के बाद निराश्रित हो चुके उनके परिवारों के लिए उचित सहायता प्रदान कर सकती थी। इसी मूल समस्या के कारण भारतीय वायुसेना के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं विकलांग कार्मिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 28 अक्टूबर 1970 को वायुसेना संगनी कल्याण संस्थान का उदय हुआ। President Air Force Wives Welfare Association, Mrs. Neeta Chaudhary has arrived. She has been received by President AFA Regional, Mrs. Rekha Prabhakaran. She was received by President AFA Regional, Mrs. AFA Rekha strives to Prabhakaran. channelize the tremendous potential of Sanganis and provide them with the wings of entrepreneurship and self-sufficiency. AFA has always stood in solidarity with the families of air warriors and all those supporting the Indian Air Force. One of the many endeavors of AFA are the Umeed Asha Kiran schools, which aim to provide a stable learning environment to specially able children of Indian Air Force personnel. अपनी स्थापना के समय से ही अफवाह ने वायुयोद्धाओं के परिवारों की सदैव सहायता की है। इस संस्थान ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कोविड महामारी के दौरान हर वायुयोद्धा के परिवार तक आवश्यक खाद्य एवं अन्य वस्तुएं पहुंचाकर इस संस्थान ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। Ladies and gentlemen, the Chief of the Air Staff is about to arrive. Parade! Saavdhan! वायु योद्धाओं के परिवारों की सदैव सहायता की है। इस संस्थान ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कोविड महामारी के दौरान हर वायु योद्धा के परिवार तक आवश्यक खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाकर इस संस्थान ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Chief of the Air Staff has arrived. He was received by Air Marshal Shri Kumar Prabhakaran, Air Officer Commanding in Chief, Western Air Command. Now you can see the ensign in formation flying in, comprising 3 Mi-17 V5 helicopters of 152 helicopter unit, trooping the Indian Air Force ensign. The formation is being led by Wing Commander Vishal Jain. Parade! General salute! Slumber!
निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Parade Commander Group Captain Anup Singh, Vayu Sena Medal. Chief of the Air Staff, accompanied by the parade commander, is now proceeding to inspect the parade. The Chief of On Air the Staff, solemn occasion of Air Force Day, Chief of moving the to Air Staff inspect has today's issued parade, a message for along all the with personnel today's of parade Indian commander, Air Force Group called Captain Anup Singh, Special Order Vayu of the Sena Day, Medal. and it conveys a message of generational transformation वायु सेना with अध्यक्ष Atmanirbharta परेड as के its निरीक्षण cornerstone के लिए and a जाते हुए seamless assimilation of modern technologies with emphasis on training methods. We quote from the Special Order of the Day. We are witnessing an increasingly volatile, uncertain and complex geopolitical environment where it is becoming increasingly essential to have credible and robust armed forces to sustain development to the nation. The Indian Air Force will also have to evolve and maintain an edge by adding new capabilities and harnessing modern technology. This will call for re-equipping, retaining and remodeling our equipment, training and methods of Parade warfighting Adjutant to be more Flight contemporary Lieutenant and relevant. Abhigyan Singh. Number 1 Squadron One commanded squadron by Squadron by Leader Squadron Arjun Leader Malhotra. Arjun Malhotra. Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Nikesh Dhami. Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Nikesh Dhami. The Nishan Toli led by Flight Lieutenant Chirag The Shioran. Nishan Toli led by Flight Lieutenant Chirag Sharon. Number 3 Squadron commanded by Squadron Leader Vipin Kumar. Number 3 Squadron in command of Squadron Leader Vipin Kumar. Number 4 Squadron commanded by Squadron Leader Ashish Ambasht. And number 4 Squadron in command of Squadron Leader Ashish Ambashta. Order of the day, and I quote, on the occasion of the 90th anniversary of Indian Air Force, I extend my warm greetings to all air warriors, NCs, DSE personnel and their families. Over the last 9 decades, the Indian Air Force has come a long way in transforming into one of the finest air forces in the world. We are witnessing an increasingly volatile, uncertain and complex geopolitical environment where it is becoming increasingly essential to have a credible and robust armed forces to sustain development of the nation. Launch of Agnipath scheme gives the opportunity to harness the potential वर्ष India's राष्ट्रपति youth की ओर and से channelize it 3 towards the युद्ध सेवा service मेडल, 4 वायुसेना मेडल वीरता के लिए, 14 वायुसेना मेडल और 28 विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना अध्यक्ष द्वारा चयनित वायु योद्धाओं को 22 सितंबर को दिल्ली में प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 6 यूनिटों को यूनिट प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सभी वायु योद्धाओं की कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण को हम नमन करते हैं। परेड को कॉर्डन के कॉलम में बंद से गुजरने की आज्ञा दें श्रीमान।
Toli in command of Flight Lieutenant Chirag Shirao. परेड अब आपके सामने से रफाल फ्लायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजरे। यह धुन ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई। परेड अब सामने से रफेल फ्लायर्स की जोशीली धुन पर मार्च करते हुए गुजर रही है। ये धुन हार्मोनी फ्लाइंग ऑफिसर दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित की गई है। Parade now marching on to the tune of Rafale flags. Arms swinging, heels digging, heads held high. Proud of the blue Airforce uniform and motto. Brothers push up deep down, don't touch the sky and grow. And up in the sky, you can see three flying the Rudra formation. Rudra formation presenting an aerial salute to the chief of the air staff. Formation led today by Captain A.S. Singh. आज ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाते ये कदम दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधों से कंधे मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारे वायु योद्धाओं का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ते हुए कह रहा है, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। And a smart salute by their warriors, the chief of the air staff. Drill and marching through essential elements of any military parade, ensuring a disciplined team. Air Force Band. Led today by Warrant Officer Deepak Varma. जी हाँ, आज की इस परेड को लय और धुन दे रहे हैं नंबर 3 और नंबर 6 वायुसेना बैंड के सदस्य, जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद तथा एयरफोर्स स्टेशन पालम से आए हुए हैं।
dressed in resplendent ceremonials have always enthralled the audience with their soul-stirring music. मिलिट्री बैंड का ये दस्ता विशेष रूप से जो धुनें बजा रहा है वो एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, रेफेल फ्लायर्स, उनकी धुन है, साथ ही सारे जहां से अच्छा। अभिभाषण के लिए तैयार है जीवन। The Chief of Air Staff will now address today's parade. Senior officers from the three services and the Ministry of Defence, esteemed veterans, air warriors on parade, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen, on the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. In a break from tradition, we have decided to conduct the Air Force Day Parade at Chandigarh this year and in different locations across the country from here onwards. I would like to compliment the AOC&C Western Air Command, AOC Advanced Headquarters, the AOCs of 12 Wing and 3 BRD, and the team for putting up such a befitting show in such a short time. My compliments also to the parade commander and all air warriors on parade for your immaculate turnout, precise drill movements, astute military bearing and josh. Good show and well done. We have inherited a proud legacy curated by the sheer hard work, perseverance and vision of our predecessors.
it will only be right to acknowledge the contributions of our veterans who have charted this course, and now the onus is on us to usher the Air Force into the centenary decade. My salute to the former chiefs for steering the Air Force in the right direction, and my assurance to them that I, ably supported by all Air Warriors, will lead the Air Force to scale even greater heights. On behalf of all Air Warriors, I would like to pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today is an occasion to renew our allegiance to the Constitution of India, and as preservers of integrity and sovereignty of our country, we owe it to our future generations. On this historic occasion, it is my privilege to announce that the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft. Creation of this branch would result in savings of over 3,400 crores due to the reduced expenditure on flying training. Induction of Air Warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveers starting next year. Creation of infrastructure is in progress, and streamlining of trade structures is being finalized. In the last 1 year, we have had our share of challenges, and the Air Force has taken these challenges head-on and with all guns blazing. Continued deployment along our borders, HYGIEIA operations, or rescuing stranded Indians from conflict zones. We have seen the entire spectrum of roles and tasks laid down for the Air Force being undertaken. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea, and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the convergence of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible, and adaptive technology. Technology has given us the wherewithal to be innovative. We need to accept the fact that tomorrow's conflicts cannot be fought with yesterday's mindset. To be able to execute all missions in an environment of denial will increasingly be the basis of our training in the Air Force. Keeping this in mind, there is a need to plan for integrated and joint application of combat power. The key to success in multi-domain operations is to have flexible, robust, redundant command and control structures, which will allow a joint force to dominate across the domains. No single service can win a war on its own. Work is in progress to enhance jointness amongst the 3 services. The theme for this year's anniversary celebrations, Indian Air Force, Transforming for the Future, is very apt and highlights the Indian Air Force's need to redefine, reimagine, and recalibrate to transform into a contemporary and future-ready force. Our fighting potential has to be sustained over the years through the induction of new generation fighters, AWACS, AEWC, and flight refueling aircraft. We have initiated necessary steps to ensure our fighter squadron strength remains at the desired level. Indigenous development of 6 AEWC Mark II has been sanctioned, and we are actively pursuing the acquisition of I-STAR, UAVs, counter-UAS technology, and also strengthening our networks. Modern armed forces have to be sufficiently self-reliant to ensure minimum disruptions.
Towards this, Atmanirbharta and Make in India is a step in the right direction. Our indigenous operational network, AFNET, the backbone of all air operations, the IACCS, one of the largest maintenance management protocols, the EMMS, and the fact that we are completely paperless in our offices through the e-office application is a testimony to our commitment towards becoming self-reliant. The light combat aircraft, advanced light helicopter, Akash, Astra, and BrahMos are a few examples of the indigenous hardware that has already been inducted and operationalized. We have also signed a contract for 83 LCA Mark 1A and are fully committed to the development of the LCA Mark II and the AMCA. The advent of drones, swarm drones, hypersonic weapons, and space-based ISR systems have added new dimensions to warfighting. To effectively handle the full spectrum, artificial intelligence is being used for quicker decision-making and analysis of big data. I am happy to report that several projects are well underway to utilize the potential of automation, data analytics, and artificial intelligence to transform our operational philosophy. The growth and success of any organization revolves around its personnel. Irrespective of the years of experience or position, each one of us is a vital link in the organization. We need to recognize our importance in the chain and understand that what we do every day at the workplace matters. A smart and efficient day's work will instill pride in our job. Our aim should be to match or surpass modern industry standards in operations, maintenance, and administration. As an organization, we need to incorporate the principles of continuous process improvement at our workplace. This can only be achieved through critical problem identification, understanding the root causes, and providing workable solutions to eliminate waste. We must focus on multi-skilling and multitasking to create a smart working environment and enhance efficiency. This is only possible if we build on our experience and develop innovative thinking. There is a tremendous scope for change, and change we must to evolve and be relevant. The challenge I pose to you all today is to transform into forward-thinking and forward-looking air warriors who can support our process of adapting to a constantly changing environment. I call upon every air warrior to be a part of the solution by your creativity, innovative thinking, and the drive to lead the change. I promise you good leadership, a good working environment, and the best equipment that we can muster. I want you to have faith and confidence in your abilities and a resolve to do the impossible. I want you to display exceptional courage and fortitude, to have compassion for your subordinates, and most importantly, be good professionals. As we celebrate 90 years of professional excellence, it is incumbent on us to preserve our past and accurately record the present so that the future generations of the Air Force benefit from it. The culture and traditions of the Air Force have led us to excel in our profession. But remember that while we have to preserve those elements of our culture that strengthen the Air Force, we must be prepared to shed those that are barriers to efficiency and mission accomplishment. I congratulate all of you for the successes of the Indian Air Force, which would not have been possible without your collective, sincere, and dedicated efforts as a team. As we start a new chapter in the history of the Indian Air Force, our aim should be to sustain our capabilities as a fearless and potent force and maintain a cohesive, happy family. I have no doubt that your commitment and your collective capacity to achieve excellence will take the Indian Air Force to even greater heights in the years ahead. On behalf of my wife Neeta, I would like to congratulate everyone on the 90th anniversary of the Indian Air Force, and may the Indian Air Force always touch the sky with glory. Thank you and Jai Hind. All are requested to rise for the national anthem. अब राष्ट्रगान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान शुरू कर।
the parade commander, has now taken permission to march off the Nishan Toli and the parade from the parade ground. Colours of march of honor were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954, in recognition of its service to the nation. Colours, therefore, are highly revered and are displayed with due fanfare and honor only on special occasions. Presentation of the colours to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. It is customary to rise whenever the colour passes in front of the audience and all uniform personnel salute. निशान टोली सामने से आते हुए सभी इनके सम्मान में खड़े हो गए हैं और जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है वर्दीधारी गण जो हैं वो सलामी दे रहे हैं। The Nishan Toli marching off the parade ground onto the tune of Space Flight. parade ground. वायुसेना से जुड़े और सेना के अन्य अंगों से संबद्ध कई वरिष्ठ अधिकारी इस समारोह में उपस्थित होकर शान बढ़ा रहे हैं।
इनमें कई पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आदि शामिल थे। Chief of Air Staff now meeting former chiefs in the spectators gallery. Air Chief Marshal A.Y. Thickness, Air Chief Marshal R.K. Bhadoria. Yes. Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Mrs. Tyagi, Mrs. Neeta Chaudhary, President AFA. भव्य परेड के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अब हम आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धा तकनीकी दक्षता प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल दिखाएंगे, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को अल्प समय के अंदर खोलकर पुनः चलेंगे। In the next few minutes, what you are going to witness is a different drill. The team in front of you onto your television screen that you can see will simulate the actions of a special force in difficult terrain. The team leader, AC Navdeep Singh, will now take permission from the Chief of the Air Staff before they start today's gypsy drill. भारतीय वायुसेना के नव प्रशिक्षित वायु योद्धाओं की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करते हुए एक जिप्सी ड्रिल यहाँ दिखाई जाएगी, जिसमें एक चलते फिरते वाहन को 5 मिनट के अंदर खोलकर पुनः चलने योग्य बना दिया जाएगा। ये ड्रिल न केवल युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हुए बख्तरबंद गाड़ियों में आई खराबी को ठीक करने में दक्षता का प्रदर्शन करती है, वहीं दूसरी ओर नए वायु योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। परिवहन की यांत्रिक संक्रिया AC Navdeep आरंभ करने Singh की now आज्ञा taking दीजिए। permission from the Chief of the Air Staff to Gentlemen. commence the drill. There is no mountain high enough. Ahead of him. When faced with an obstruction, instead of stopping in their tracks, the team takes a split-second decision. Their actions will speak volumes of their resolve towards successful completion of the task entrusted to them. The nerves of steel in a high-pressure situation and the quality training they undergo. The Maruti Gypsy, dismantled up to the chassis level and assembled back to running condition in a cohesive and sequential manner.
vehicle weighs about 1.2 tons. The half-ton engine block, which is otherwise lifted using a pulley and chain system in a workshop, is lifted manually by our foot soldiers, carried over rough terrain and put in place without affecting the serviceability. तकनीकी कुशलता, एकाग्रता, गति एवं समन्वय का संयोजन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। There is no mountain high enough, no canyon deep enough, nor a river wide enough to keep an air warrior from accomplishing the task ahead of him. If the boulder cannot be moved, the vehicle will. Watch closely as the team unmoves by the hindrance blocking their paths, proceeds to take part their transport, carry it literally piece by piece, assemble it and continue towards their objective. The drill displays the quick and crisp movements of the trainees and their ability to perform accurately within the constraints of time. The speciality of this drill is that the entire activity is performed by a group of young air warriors who have just passed out from the training institution. Participants of the drill are LAC Rohit Kumar, LAC Ankush Singh, AC Vishal Singh, AC Navdeep Singh, AC Sahil Nehra, AC Anmol Tyagi, AC Pankaj Barwar, AC Ranjan Sharma, AC Yogesh, AC Ace Rathore, AC SK Sharma and AC Bunty Singh. पूरी कुशलता और तल्लीनता के साथ काम कर इन योद्धाओं ने 1.2 टन वजनी वाहन को पुनः जोड़ दिया है। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करते हुए दर्शक और अतिथिगण। Team successfully completed assembling of the vehicle. ये ड्रिल न केवल सराहनीय है बल्कि युद्ध के दौरान भी अत्यंत उपयोगी साबित होती है। Former chiefs in the spectators gallery. वायुसेना से जुड़े अधिकारियों और दर्शकों का समूह, इन्होंने ये प्रस्तुति देखी जिसमें एयर वॉरियर्स ने जिप्सी ड्रिल करके दिखाया। And now you will witness the display of precision rifle drill by the Air Warrior Drill Team of the Indian Air Force, named as Arjun. Arjun, the Air Warrior Drill Team, was formed in the year 2004, and during 18 years of its glorious existence, it has won accolades in various national and international performances,
making it the first drill team of the Indian Defence Forces. The name Arjun is a tribute to the late Marshal of the Indian Air Force, Arjun Singh Padma Vibhushan, Distinguished Flying Cross, who lived his whole life as a true soldier and is an inspiration to generations of service personnel. Under the able guidance of its officer in charge, Wing Commander Kunal Khanna, Team Administrator, Squadron Leader Akash Gangat, and competent instructors JWRB Upadhyay and Sergeant Rajdeep Singh, the team aspires to achieve the incredible. Today, the drill team will perform unconventional and breathtaking rifle maneuvers. The motto of the team is simple: drill to thrill. अब टीम लीडर हमारे मुख्य अतिथि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से प्रदर्शन को शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं। भैया टेरिटरी को इशू करने की आज्ञा है मत। और अब टीम आपको रोमांचित करने के लिए तैयार है। टीम आज रोमांचक राइफल करतबों को 9 विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी दक्षता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को प्रदर्शित करेगी। असीम अभ्यास एवं परिश्रम करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है। टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन से कूच करेगी। और अब देखिए अब तक का एक नया कारनामा, जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने साथ चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं। इस बीच एलएसी तरुण देसवाल आगे बढ़कर उच्च स्तरीय एकल प्रदर्शन करेंगे, जो कि फुर्ती, लचीलापन और अदम्य साहस का संयोजन है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। यहाँ हमें इन वायुयोद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है वह इनके हाथ में खिलौनों के समान प्रतीत होता है। अब समय है कि आपको एक और हैरत अंगेज करतब पेश किया जाए, जिसमें वायुयोद्धा बिना देखे हुए पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके मध्य 12 फीट की दूरी भी है। अगली फॉर्मेशन है इनक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायुयोद्धा एक ही कतार में चलते हुए राइफल की अदला बदली करेंगे।
यह प्रदर्शन अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ साथ तीव्रता का प्रतीक है। ड्रिल वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन वायुसेना की जीवन शैली है। अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से न हटाएं। अब आप देखेंगे कितने अनोखे अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल पास करेंगे। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। यहाँ यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में धीरज के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि उनमें मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। एक बार फिर से टीम आपको हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिन देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को एक बार फिर से राइफल फेंकेगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिगजैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए संयोजित राइफल करतब करेगी। और एक बार फिर से हमारे बीच आ गए हैं एलएसी तरुण, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में प्रदर्शन करेगी ताकि आप निकट से इस प्रदर्शन का अनुभव ले सकें। यह टीम सारी गतिविधियों को जीरो एरर टॉलरेंस के अंतर्गत प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं एलएसी विक्रम। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी धनाराम, संतोष, अमन, अंकित, रंजय, पंकज, एनके झा, साहिल और कौपल चिन्नतंबी। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं आदर्श, अमन, विशाल, सुमंत, नितेश, प्रियांक, साहिल गोसाई, मुकुंद और एलएसी एचपी सिंह। टीम की अगली फॉर्मेशन है क्राउन फॉर्मेशन। ड्रिल के संगीत को संयोजित किया है विंग कमांडर जयचंद्रन, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड ने। देवियों और सचरों, टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बना रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। टीम लीडर अपने साथियों की ड्रिल क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक कर्तव्य है। और जिन्होंने एक बार पिछला मौका छोड़ दिया, उनके लिए अब एक बार और मौका। यह कठिन परिश्रम, बेहतरीन मानसिक शारीरिक तालमेल और अपनी एवं अपने साथियों की योग्यता पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस ड्रिल टीम ने .303 राइफल का प्रयोग किया। इस पूरी ड्रिल टीम को प्रशिक्षित करने में कुल 6 महीनों का समय लगता है। टोली को दादाने की आज्ञा दे। मत
Put your hands together once again for a breathtaking performance by these young air warriors. अब आपके सामने भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा अपनी नई युद्धक वर्दी को पहली बार देश के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Now, Wing Commander Kunal Khanna and the team are presenting the new combat uniform of the Indian Air Force. Right, come to salute, salute. अब आप देख सकते हैं हमारे वायु योद्धा जो आपके समक्ष कदम ताल करते हुए आ रहे हैं। The Air Warriors are adorning the combat T-shirt which signifies the working dress of the Indian Air Force. भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट टी शर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। यह नई वर्दी एयरफोर्स स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी के कई प्रयास और अनुसंधान का परिणाम है। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एवं बदलते युद्धक वातावरण और तौर तरीकों में इस युद्धक वर्दी का विशेष रूप से प्रयोग एक आवश्यक कदम है। इस वर्दी को धारण करके युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन को चकमा देते हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि रेगिस्तानी तथा पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में भी यह वर्दी एक पारंपरिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बदलती सैन्य कार्यवाहियों में किसी भी अभियान को 100% सफल बनाने में यह एक अति आवश्यक अंग है। इस वर्दी की विशेषता है इसकी कॉम्बैट टी शर्ट, फील्ड स्केल डिसरप्टिव कैप, कॉम्बैट बोनी हैट, डिसरप्टिव वेब बेल्ट, एंकलेट कॉम्बैट बूट्स और मैचिंग टर्बन। आगे बढ़ेगा, The new uniform is unique. It has an exclusive, contemporary and functional design made in order to make the soldier better camouflaged in nature. The fabric is lighter and sturdier, making it comfortable to be worn for longer durations. This new uniform's versatility also means that it can be worn in different terrains, from the mountainous terrain of Kashmir to the vast coastline of the peninsula, and from the thick jungles of the northeast to the deserts of Rajasthan. The Air Warriors standing smartly in front of you are in full disruptive gear, showcasing the new combat uniform. Flight, Marco, flight! Flight, test, shot! नई युद्धक वर्दी एयरफोर्स स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी के कई प्रयास और अनुसंधान का परिणाम है। वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बदलते युद्धक वातावरण और तौर तरीकों में इस युद्धक वर्दी का विशेष रूप से प्रयोग एक आवश्यक कदम है। इस वर्दी को धारण करके युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन को चकमा देते हुए लगातार आगे बढ़ा जा सकता है, बल्कि
रेगिस्तानी तथा पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों में भी ये वर्दी एक पारंपरिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम से लिया गया है, जो भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में आता है। नभः स्पर्शम दीप्तम